Hey guys, welcome to the Manoeuvre Education. As I'm getting lot of calls from the students with respect to the expected cutoff, either it will increase or the decrease. Okay, now the option forms we have to choose our respective colleges, and for that all the colleges there are certain limits like cutoffs, right? Either it will increase or the decrease. You have scored 70 marks or 80 or 90, might be 120. अब 120 के ऊपर जो है easily will get the admission. But what about 70, 80 and 90? So watch this particular video till the end because we'll talk about complete college list, their seat intake and the expected cutoff. So guys, once again I'm saying these are the expected cutoff, not the exact cutoff, because we are not getting the data of Maharashtra state candidate and even the OMS candidates, right? So this is the expected cutoff. You can easily make your preference list. Okay, let's watch this particular video till the end. And before moving further guys, we have launched the batches for all the law entrance exams, so you can start preparation with us. You will get all these features, the mentorship, complete motivation, thoroughly cognitive effects and complete guidance about the cap round program. So call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dadar for classroom coaching, and for live interaction you can call on 8828-51455 or you can visit our website manoeuvre.com/law entrance. So let's talk about the PDF first. Here I make one particular PDF file for you. Now this file you will be find under the CAP program. So जो भी आपका CAP program है, there you will get this particular PDF. And yeah, अगर आपको यहाँ से भी देखना है on YouTube, you can take the screenshot of these all cutoffs. Okay, MS Law CET 3 years, the expected colleges and their respective cutoffs. Okay, college list out हो चुकी है, you can watch that also. Now this particular handout you will find under the CAP program. So link given in the description, kindly go to the link. And yeah, if you have any doubts and queries, then you can ask me in the below comment section. So very first one, the government law college, always everyone targets the GLC Mumbai, right? Why? Because it is the topmost institute with respect to the legal programs. There are 300 seats. So MS candidate 116, OMS 118. Why OMS less this year? Guys, see, cutoff काफ़ी अच्छा गया है. Okay, 131 to 138. There are 10 candidates, while 121 to 130 there are 107 candidates, right? And now, so as per the result analysis, guys, we already checked in our previous video. As per the result analysis, there are maximum chances for all the candidates to get the top colleges, right? Because the strength itself says 91 to 100 there are 3993 candidates, while 81 to 90 there are 7k plus candidates. Okay, 7000 plus candidates. So according to this data, most of the cutoff will be lie under this range, 81 to 100. Okay my friends, so if you scored good marks, and yeah, OMS candidate, you can add +3 or -3 in these cutoffs. Okay, easily guys. देखो preferences आपके जितने होंगे, then accordingly you will get the respective college. So government law college GLC Mumbai 116 आप easily ले सकते हो. Here I am talking about with respect to the law 3 years. Okay, ILS law college 112. Okay, +- 3 आपको कर लेना है. Okay, now thereafter you can target the Siddharth law college, Kishan Chand Chelaram, GJ Advani, Navalmal, Jitendra Chauhan, JCCL, Rizvi Law College. Then you can target up to these cutoff 95 to 100. Thereafter, People Education Societies, Dr. Ambedkar College of Law, Mumbai 94 to 100. Diva Patel College of Law, Nerul Navi Mumbai 94 to 100. Shankar Chauhan College 93 to 99. So these are the expected cutoff. Okay. Once again, I'm saying these are the expected cutoff. Okay, guys. So according to this, you can easily make your preference list. Okay. You can take the screenshot, otherwise you can check the link given in the description. Okay, moving further, People Education Societies, Advocate Balasaheb Apte Law College, Dadar Mumbai 93 to 98. Vidya Prasarak Mandal Thane Municipal Corporation Law 91 to 97, Mahatma Gandhi Mission 90 to 97, MKS 85 to 90, Ambedkar College of Law Nagpur 85 to 90, Modern Law College Pune 80 to 90, RTI Menu Babasaheb Ambedkar College of Law Main Branch Nagpur 80 to 87. Thereafter, Yashwantrao Chauhan College at Pune, good college guys, 80 to 87. Okay, and these are the respective seat intake, so you can easily check this. Okay, moving further, Lord's Universal College 78 to 86 and SS Maniyar Jalgaon 78 to 85. So if you are in this particular range, then target these all colleges, make list as your preference list. And thereafter, this all Yashwantrao Chauhan Law College unaided 78 to 85, 60 seats. Okay, Bharati Vidyapit New Law College Kolhapur 76 to 84, Manikchand Pahade MP Law College Aurangabad 74 to 83, Bharati Vidyapit New Law College unaided
74 to 83, SNDT 74 to 81, and these all are the respective colleges. Okay guys, you can check this. Manichand Pahade MP Law College, Children Welfare Maratha Vidya Prasarak Samaj Law College, Nalanda Balaji Vivekananda Education, Oriental Dr. Ambedkar College of Law, Central India College of Law, Agnel School of Law, and lot more colleges from the Mumbai region, from the Nashik, from the Pune, from the Aurangabad, Nagpur, Navi Mumbai. Okay, if you belongs to these all cities or the other one, then according to these you can easily target the top colleges. If you belong to the Nashik, suppose Nashik से belong करते हो, then you can easily target Navjivan unaided. Thereafter G Societies, NB Thakur Law College, KBH Law College, unaided. Okay, बहुत सारे colleges है guys, you can easily target these all. Okay, so take the screenshot of all these cutoffs. You can also target Pune 1 AKK New Law Academy Minority College 65 to 70, GH Raisoni Law College at Nagpur, very good college 67 to 73, and Jayantilal H Patel Law College 65 to 70 easily आपको मिल जाएगा guys. Law 5 years का जो कट ऑफ है guys, वो obviously हमेशा हाई होता है as compared to the law 3 years, right? But this year's score says लॉ 5 इयर्स का डेटा काफ़ी कम रह चुका है एंड लॉ 3 इयर्स को लेकर अच्छे स्कोर आए, तो फिर भी आपका जो कट ऑफ रेंज है इससे और बढ़ सकता है. सो एज आई सेड, एड +3 एंड -3 इन ऑल दिस कट ऑफ्स. ओके, एंड मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट गाइज. जहाँ जिस कॉलेज में जाना है आपको, टारगेट दैट पर्टिकुलर कॉलेज एट द फर्स्ट प्रेफरेंस. ओके, ऑलवेज एट द फर्स्ट प्रेफरेंस, दैट कॉलेज शुड बी ऑलवेज फर्स्ट. अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, GLC, ILS, शंकरराव चौहान ऐसे सब कॉलेज एंटर कर रहे हो, देन उसको प्रेफरेंसेस सबसे अच्छा देना है. ओके, दे आफ्टर अगर आपको लग रहा है कि आपका कट ऑफ 70 to 75 के रेंज में है और ओपन OMS कैटेगरी कैंडिडेट हो, देन गाइज ये प्रेफरेंस देकर नहीं चलेगा. ओके, यू कैन टारगेट दीज ऑल कॉलेजेस जो इस पर्टिकुलर रेंज में है. ओके, अगर 75 है, डोंट वरी गाइज, जो 80 के अब भी है, 85, 90, इनको भी आप टारगेट कर सकते हो, इनको भी आप प्रेफरेंस दो, हो सकता है कि आपके चांसेस वहाँ बन जाए. ओके, मूविंग फर्दर, अभिनव एजुकेशन एट पुणे, द आफ्टर गोखले एजुकेशन सोसाइटीज लॉ कॉलेज नवी मुंबई, MS लॉ कॉलेज मुंब्रा ठाणे. ओके, कर्मवीर औदुंबल पाटिल लॉ कॉलेज एट ऑल दिस कट ऑफ बस 65 to 68, 70 के रेंज में आप इनको टारगेट कर सकते हो. ओके, इफ़ योर स्कोर इज लेस दैन 60, दैन ये सारे कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो. अकोला, सिंहगढ़ लॉ कॉलेज काफ़ी फेमस हो चुका है गाइस एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर. लॉ 5 ईयर्स को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसे टारगेट करते हैं, बट हाँ, लॉ 3 ईयर्स को लेकर कट ऑफ थोड़ा कम होता है, सो 60 to 63. लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा अगर 65 और 68 तक भी जा सकता है, इवन 70 तक. ओके, न्यू लॉ कॉलेज मुंबई 60, 63. ओके, LR तिवारी कॉलेज ऑफ लॉ ठाणे, आई थिंक इट इज़ एट द मीरा रोड. ओके, 60 to 63. शिवाजी मराठा सोसाइटीज लॉ कॉलेज पुणे 60, 63. ये सारे कॉलेजेस आप 60 to 63 में टारगेट कर सकते हो. ओके, DY पाटिल यूनिटेक, अगेन ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है गाइज, इसका स्कोर भी डिसेंट सा जा सकता है. MS को लेकर भी 70 अप जा सकता है एंड OMS को लेकर अराउंड 85 तक भी. ओके, दीज आर दी, बट here आर लिस्टेड दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ. ओके, सो प्रेफरेंस मैटर्स गाइज. अगर पुणे के बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ यूनिटेक को टारगेट करते हैं, दैन डेफिनेटली इसका कट ऑफ जो है वो हाई हो जाएगा. Thereafter, संत तुकाराम लॉ कॉलेज एट लातूर, HRSPM सर सेनापति हंबीरराव मोहिते लॉ कॉलेज राजगुरुनगर, लेट MLC वसंतराव जी काले लॉ कॉलेज औरंगाबाद 58 to 60, एडवोकेट भगवान केनी चैरिटेबल ट्रस्ट जय भगवान कॉलेज ऑफ लॉ 58 to 60. These all are the seat intake. Okay, so go through all these cutoffs and check exactly where you are and target all these colleges. Okay, from the Maharashtra. Okay guys, महाराष्ट्र कॉलेजेस क्यों टारगेट करने हैं? बिकॉज द लो फी स्ट्रक्चर एंड द गुड प्लेसमेंट स्टैट्स टू. ओके, सो विद्या प्रतिष्ठान वसंतराव जी पवार लॉ कॉलेज अनएडेड बारामती 56 to 59, बापूजी सालुंके लॉ कॉलेज उस्मानाबाद 56 to 59, KL सोसाइटीज KLA कॉलेज ऑफ लॉ कलम्बोली 56 to 59, शिक्षण प्रसारक संस्था श्री ओमकारनाथ मालपानी लॉ कॉलेज एट संगमनेर 56 to 59. गाइज, जो भी कैंडिडेट्स हो, जहाँ से भी बिलोंग करते हो, आप अपने रिस्पेक्टिव सिटीज से बिलोंग करते हो, दैन डू चेक दिस पर्टिकुलर PDF फाइल एंड दे आफ्टर टारगेट नियर बाय. अगर आपका कट ऑफ काफ़ी कम है, दैन फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट दी नियर बाय कॉलेजेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टारगेट नियर बाय कॉलेजेस. कट ऑफ काफ़ी अच्छा है, दैन टारगेट द टॉप टायर सिटीज़. ओके, टॉप टायर सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे, उसके बाद आपको टारगेट करना है नासिक, आफ्टर यू कैन टारगेट द नागपुर, औरंगाबाद एंड ऑल्सो द अहमदनगर. ओके, लाइक दिस यू कैन टारगेट ऑल द कॉलेजेस. सो मुंबई, दैट मीन्स नवी मुंबई भी यहाँ आ गया, पुणे है, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद एंड अहमदनगर.
सो यू कैन टारगेट ऑल दिस कॉलेजेस। एंड उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा है, देन नियर बाय, अगर आप लातूर से हो तो लातूर की कॉलेज ट्राई करो, आपको दूर नहीं जाना है। डीजीपी दयानंद लॉ कॉलेज सोलापुर से हो तो वहाँ की कॉलेज ट्राई करो। ओके, वो भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है गाइस। साहाजी लॉ कॉलेज एट कोल्हापुर काफ़ी अच्छी कॉलेज है। ओके, लॉ 5 ईयर्स को लेकर ऑलमोस्ट 80 के आप इसका कट ऑफ जाता है। ओके, सो 50 to 53 आप इजीली इसको अचीव कर सकते हो। सो ओके, ऑल दीज कट ऑफ मेंशन ओवर हियर। नाउ टारगेट एज पर योर स्कोर, preference list आपके सामने है guys. Okay, now still if you have any doubts and queries, then ask me in the comment section about your college preferences. Okay, how much you scored, that means your score. Okay, and the category, all those candidates who fall under category here I mention only MS and OMS candidate cutoffs. Okay, MS you belong to the OBC, then guys 10 marks कम कर दो ओपन से. Okay, if you belong to the SC, okay, then 12 to 15 marks, and ST then you can minus 20 marks from the open category. Okay, so यहाँ आपके chances बन सकते हैं. Still जो कुछ भी आपने स्कोर किया है उसके ऊपर काफ़ी मैटर करता है. ओके गाइज, सो कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ा सा डिक्रीज ज़रूर हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ आपको चांसेस काफ़ी अच्छे हैं. सो डोंट डू एनी मिस्टेक. फर्स्ट ऑफ ऑल, link provided in the description, go to the CAP program, find all the details, all the steps, what exactly the CAP round is, and thereafter choose this particular preference list and get your top college. Okay guys, so that's all from my side. Still if you have any doubts and queries, ask me in the below comment section. We'll try to answer each and every queries guys. And in case want a preparation for 2023 and 24, then guys you can interact live with us, call on respective number, or you can also join our classroom coaching at Borivali, Vasai and other center. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all. All the best for your career. See you in the next video.